Okay, guys. Assalamu alaikum, students. So let's get started. So we are solving October, November 2023 paper 4, variant 2. And we are solving the remaining part of the paper. We have already solved the last part of the paper. So we're starting with question number 1 till 5 and then question number 7 as well. Okay, so sir, basically, this is what? This is, sir, October, November 2023, paper 2, paper 4, variant 2. Okay. So the first question says that we have to translate triangle T. Let's write down the topic as well. Make sure everyone can revise transformations topic today. Okay. So what we are doing, students, is revising the transformation topics. Okay. So what we have is basically transformation topic. So what we can say is basically, so what is the first part that this question will talk about transformations? And you can see, students, everyone can hear me, right? Okay, what we can see is, sir, okay, it's a huge question for 2 marks, 4, 6, 8, 10, 11. So almost 11 marks ke liye they have tested transformation. So let's try to solve it quickly. We have to translate triangle T by the vector. And this is one of the most recent paper, October, November 2023, guys. Okay. So we have to translate by the vector minus 7, 1 and label the image as k. Okay, so what we need to understand k, it's basically, sir, minus 7 on the x-axis. Sir, we have to do minus 7 on the x-axis and 1 on the y-axis. Okay, positive 1 on the x-axis. So it will be simple that minus 7 will be, sir, 1, 2. This point will go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1 up. It will go 1 up, positive 1 up. So it will be this point. Okay, guys, make sure you have to do it with pencil. Every student will do this with pencil, guys. Okay, you are going to do it with pencil. और फिर आप ये lines remove भी कर दो तो better है, ठीक है? Same goes like this. It will be, sir, minus 7 to the left side, 1, 2, 3 units, 4 units, 5, 6, 7 units, and 1 unit above. Okay, so it will be, the next point will be, sir, this stage, that is minus 1 comma 5. Okay, make sure you have the papers printed out in front of you so that you can check your answers one more time and you can ensure कि आपको ये concept भी clear है. Okay, everyone getting it clear with me, guys? Following? Yes, sir. So next we have the last point, that is basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and that one will go here. Okay, guys, minus 7 comma 1, 1 up. So this is how the translation is done, sir. That is, we call this basically translation. Make sure to label the image as well as, now you guys can mute. Okay, the unmuted students can mute now. Mic issue aa raha hai. Make sure to ask question if you have anything you don't get it. Okay, so that is the K triangle. Okay, this will be called triangle number K, sir. And we got 2 marks by doing this. Okay, everyone got it clear? Make sure you have to do all of this by pencil. Okay, then they are asking you that you have to describe fully the single transformation that maps triangle K onto T. So a very important question, a lot of tricky question. They are basically testing your concept. ठीक है students, वो आपका concept test कर रहे हैं कि what we need to know, sir, कि we have to describe the transformation that will map triangle K onto T. तो T, K से T जाना है. Everyone getting it? पहले हम गए थे T से K, अब हम जाएंगे के से टी. सो इट्स वेरी सिंपल कि ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड के ट्रांसलेशन ही होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पॉजिटिव एंड 1 डाउन. ओके, 7 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 डाउन. सो आपको 1 मार्क अचीव करने के लिए सिर्फ सिंपल लिखना है कि दिस इज ट्रांसलेशन एंड इट विल बी 7 units to the right of the x axis. Okay, 7 units right, positive 7 and positive negative 1. Okay, sign will change. Okay, guys, just the sign will have to change, rest will remain the same. Okay, so they are just testing your what concept. Okay, guys, got this, everyone? Part A, part 1 and part 2 is सर done. Okay, Gigi, go on, I'm listening. सर हमें मार्क नहीं मिल जाएगा अगर सिर्फ ट्रांसलेशन लिखे? डिस्क्राइब फुली ट्रांसलेशन नहीं, बेहतर है कि आप वेक्टर भी लिख देना, सेफ साइड. वैसे ठीक है, 1 मार्क का है, ट्रांसलेशन से ही मार्क मिल जाना चाहिए, बट इट्स बेटर कि हम पूरा लिख दें. सेफ साइड कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है ना क्या वेक्टर होगा. द रीजन आई एम राइटिंग इट टू बी ऑन द सेफ साइड एंड अंडरस्टैंडिंग के जो पार्ट 1 है वो कह रहा है कि टी मैप हो रहा है के पे, सेकेंड पार्ट में के मैप होगा टी पे. अंडरस्टैंडिंग तो वो ऑपोजिट है, इसीलिए मैं वेक्टर भी लिख रहा हूँ. ठीक है, गॉट इट गाइस? क्लियर ओके ऑन दिस? श्योर? ठीक है जी. Next, we have to reflect the triangle T in the line y is equals to 4. Okay.
So we have to reflect triangle T in the line. Part B is basically reflection, sir. That we have to reflect the triangle T in the line y is equals to 4. So everyone should know what is the line of y is equals to 4. Make sure everything will be done with pencil. Sir, y is equals to 4 is this line. Okay, students? Hope everyone can see the green line. Okay. So y is equals to 4, sir, is the green line. Reflection is what? Okay, same mirror image will be shown. So it will be the opposite direction will be forming, sir, in the black color. Okay, it will be end to end meeting. And this is how it will be looking like. Okay, everyone getting it, guys? Clear? So this is how it should be 6 comma 4, 6 comma 6, and 2 comma 6 are the coordinates. This is part B done. Okay, so make sure write it down in your diagram that this part be done, everything to be done in pencil form, guys. Everyone clear? Everyone as well is going to Yes, solve sir. the whole thing in pencil and make sure to remove the lines wherever is possible with a neat eraser, okay? तो हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया सर व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली वी हैव रिफ्लेक्ट द ट्रायंगल टी इन द लाइन y is equals to 4. Okay, next what we have to do, sir, is basically rotate triangle t through 90-degree clockwise about 0 comma 0. Okay, so we have to rotation करनी है to achieve the next two marks, sir. We have to rotate triangle t through 90-degree clockwise about 0 0. So ये बहुत simple है, बहुत difficult नहीं है. It will be simple के 0 0 जाना है और 90 डिग्री clockwise जाएंगे. तो each point you will match first to 0 0, guys. Getting it? And what do we mean by clockwise? Sir, clockwise का मतलब है कि according to the clock चलेंगे तो 12 1 2 3 मतलब ऐसे चलेंगे, right? According to the clock चलेंगे सर. Clockwise का मतलब क्या हो जाएगा? According to clock चलेंगे, जब 2 बजते हैं उसका 3 बजेंगे, तो that's how we are going to go. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा सर? ये सिंपल हो जाएगा कि आपका ये जो पॉइंट है, मेक श्योर आप रूलर उससे भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से. यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, तो आपको यूज करिए, आप बेसिकली प्रोटेक्टर रख के कर लेगा. एंड दैट इज हाउ इट विल बी 90 डिग्रीज हियर. ओके, understanding, guys? So I'm expecting 2 comma minus to the Sir, we first can point. use tracing paper, right? Tracing paper as well, but some centers will allow, some centers doesn't allow as well, so make sure to be on the safe side. But you can use tracing paper as well. It's completely allowed according to the universal law. Okay, it's allowed in every examination center. Okay, where it doesn't matter wherever you are exist. Okay, so this will be the next one. And if it is 6 comma 2, when we are going to do this, so 90 degrees will be forming somewhat. We can say that it will be forming at uh, let's say this place. Okay, 2 comma, yes, can you see the blue color with the blue color, guys, कि ये इस तरह आ जाएगा 90 डिग्री. Okay, make sure कि ये exactly same match होना चाहिए. So it will be at 2 comma minus 6, and that will be basically, let's do it in the orange color, कि ये जब 90 डिग्री पे आएगा 0 comma 0, it will go to that side 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए. So it will be at 4 comma like this. Okay, देखें सारे मैच कर रहे हैं, ठीक है? If you see each color separately now, you will say that, sir, yes, the diagram that I have made is correct. So it will be, I'll remove the line, students. As I said कि lines are not relevant. तो फिर आपने इसको एक मेक श्योर रूलर के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दैट दिस इज पार्ट सी इनसाइड इट, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि कौन कौन से पार्ट आपने सॉल्व करें. एवरीवन गेटिंग इट? सो दिस इज वन पार्ट सी that we have rotate triangle 3 t to 90 degree clockwise. Okay, any doubts? Anyone? Let me know with question number 1, guys. No, sir. Is everyone should be clear? So what they are doing is, it's very common that for 11 marks they will be testing all of them. Okay, right? They will be testing all of them. That is, उन्होंने हमसे translation भी test कर लिया, students. They have tested rotation as well, reflection as well, and I hope I have explained again in detail clearly. If anyone have questions, do ask. Okay. Next will be that we have to enlarge triangle T by the scale factor minus half. Okay, enlarge triangle T by scale factor minus half, center 0 comma 0, and then label the image P. Okay, so it will be again the same concept, sir. Okay, we have to go against at center 0 comma 0. From triangle T we have to go at center 0 comma 0, but यहाँ पर shrink होगा. Everyone please understand this कि एक तो ये enlargement जो है वो negative है और half हो रहा है, मतलब कि जो आपके 4 units हैं वो 2 units हो जाएंगे और आपके जो 2 units हैं वो half हो जाएंगे, मतलब 1 unit हो जाएंगे. तो what I believe will be the answer will be what, students? It will be, ये यहाँ से आ जाएगा, इसका शेप भी चेंज होगा सर. So it will be when it matches the center, it will go only one unit move forward. Okay, it will go 1 unit move forward. So ये हो जाएगा सर, it will be -1 comma 1
फॉर दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन विल बी सेम वे। ओके, कि आप इसको इससे मैच करेंगे और हाफ आगे चले जाएंगे, तो इट विल बी कि अगर ये 2 था तो यहाँ पर आ जाएगा दिस वन ओनली। तब तो ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आपका -3 का -1 विल बी द नेक्स्ट वन। आप इमेजिनेशन से, प्रैक्टिस की बेस पर और गैसेस से भी कर सकते हैं। गैस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बेहतर है कि आप उसको सिस्टमैटिकली सोच के करें। सोच के भी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है गाइज। तो ये इसके नीचे आना चाहिए, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, बट ये खाली 1 यूनिट आएगा, तो इट विल बी दिस थिंग गाइज। ओके, सो हियर वी गो, वी हैव गॉट द नेक्स्ट वन एज वेल। लेट्स रिमूव द लाइन सर। जैसे मैंने कहा कि एक तो ये शेप चेंज कर लेगा, एज एवरीवन स्टूडेंट्स गेटिंग इट सर। एक तो ये शेप चेंज कर रहा है, और सेकेंडली ये शेप चेंज करने का मतलब है कि जब नेगेटिव साइन आता है, हमने पढ़ा था सर कि जब नेगेटिव एनलार्जमेंट होती है, तो इट्स वेरी क्लियर कि नेगेटिव एनलार्जमेंट में दोनों शेप्स ऑपोजिट वे में आ जाएंगे। और जो, हाँ, क्योंकि इसकी जो स्केल फैक्टर है वो हाफ है, तो हाफ मीन्स पूरा का पूरा शेप डिवाइड बाय 2 हो रहा है। तो 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, और 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आ गया गाइस। गेटिंग इट? सो दिस इज पार्ट डी डन। एंड वंस वी हैव गॉट द पार्ट डी, ओके, दैट इज, अच्छा, वी हैव टू लेबल द इमेज एज पी। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो मेंशन कर दें कि आपको लेबल करना है इमेज एज पी, तो आप पी में पी को मेजर कर देंगे गाइस। गेटिंग इट? इज एवरीवन गेटिंग इट? दे हैव टोल्ड अस। तो एक मार्क इसका भी होगा कि आपने लेबल करना है इमेज को एज पी। फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है, दैट विल मैप ट्राइंगल पी ऑन ट्राइंगल टी। सो पी जो है वो किस तरह मैप करेगा ट्राइंगल पी से टी पर। तो फर्स्ट थिंग, आपको एक मार्क तो इसी का मिल जाएगा कि सर ये इनलार्जमेंट ही है। ठीक है गाइस, ये इनलार्जमेंट है। ऑपोजिट वे में करने को कह रहे हैं, तो इनलार्जमेंट ही है, बिकॉज स्मॉल शेप से वो बिग शेप बन रहा है। इज एवरीवन गेटिंग इट गाइस? फॉलोइंग? स्मॉल शेप से वो बिग शेप बन रहा है, सो इनलार्जमेंट हो जाएगा। वी हैव टू मैप ट्राइंगल पी ऑन ट्राइंगल टी। और फिर क्या हो जाएगा कि सर ये स्केल फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि शेप चेंज हो रहा है, तो स्केल फैक्टर हो जाएगा डबल। तो इट विल बी स्केल फैक्टर ऑफ -2। ओके स्टूडेंट, स्केल फैक्टर -2 आ गया। और हमारा सेंटर क्या होगा स्टूडेंट? सेंटर तो सेम ही रहेगा, दैट इज 0, 0। ओके, तो बेसिकली मार्क्स किसके हैं? 1 मार्क तो 100% इसका है, स्केल फैक्टर लिखने का -2। और बाकी रिमेनिंग 1 मार्क जो होगा, जैसे हम डिस्कस करेंगे मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिमेनिंग 1 मार्क जो है वो इन दोनों का मिला के होगा। गाइस गेटिंग इट क्लियर? इज एवरीवन गॉट इट? सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हमने कर लिया गाइस। इफ एनीवन हैव डाउट्स लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस एनीवन? नो तो सर, पूछ क्लियर। लें। सही है? So this is clear. Okay, question number 1 is done. Moving forward, question number 2 is very, make sure to take a screenshot as well if anyone wants to do. Question number 2 is basically being tested on search statistics. So let's do statistics question now. As always, this is a compulsory topic, and they will be definitely testing you on statistics in paper 4, 100% in paper 2 as well. Okay, so let's do this one quickly. This one is not difficult, or this one is average level. So I can say question number 1 is difficult level or hard level, we can say, but question number 2 is medium or easy level. Okay, so Daisy, so there's a person Daisy. Daisy records her 50 homework marks. Okay, so there's a person, sir, Daisy, and Daisy is recording her 50 homework marks. What we have to write down is basically the range, okay? So how do you understand the table shows the results? There are 50 homework marks, okay? So what we can say that 18 marks, 11 tests are there in which she have got 18 marks. Guys, getting it? There are 11 tests. Is everyone getting it? आप इन सबको ऐड करेंगे तो there will be 50 marks test, okay? ये इनके 50 homework के marks हैं. Is everyone getting it? 1, 3, Yes, 19, sir. 11 ये सारे homeworks हैं. Guys, follow करें. ये सारे जो हैं वो सर होमवर्क्स हैं। मेक श्योर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि उनके सारे उनके होम नंबर ऑफ होमवर्क्स हैं, इनको ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। और कितने मार्क्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज बेसिकली कि देयर आर 11 होमवर्क्स इन विच शी हैव स्कोर्ड 18 मार्क्स। सर देयर आर 3 होमवर्क्स इन विच शी हैव स्कोर्ड 16 मार्क्स। देयर आर 6 होमवर्क्स इन विच शी हैव स्कोर्ड 20 मार्क्स। ओके, so what they are asking is what is the range, and we already know what is the range. Range is basically the highest value minus the lowest value, right guys? Range is basically the highest value minus the lowest value, so it will be 20 minus 15. Highest marks are 20, lowest marks are 15, so range is sir 5. Okay, everyone getting it guys? Clear? Understood? Hello? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. क्लियर। Then it will be write down the mode as well. What is the mode? Mode is the most repetitive number. So mode is the most repetitive number. So we are going to say that most repetitive number is what? 17 marks are the most, because there are 19 homeworks who have 17 marks. So 17 is the most repetitive number. 17 is the most repetitive frequency.
17 marks are the most repetitive number. That's the mode. Okay. Understood? Then we have to find the median, sir. So median is the middle value. How you can find median? Median will be the middle value. Follow in this case, it will be the 50 plus 1 divided by 2. So it will be 25.5. Okay, 25.25 position. How do you find the median in this case? Okay, follow carefully. It will be, you will add the frequencies. Okay, आप cumulative frequency निकाल लें. It is 1 mark here. This will be 1 plus 3, 4. 4 plus 19 will be 23. So what you can say? Getting it, guys? 51 Yes. divided by, yeah, so it will be 23. So still we have to go to 25, and 23 plus 11 will be 34. So it means that 18 is the median. जो आपका middle value है वो 18th homework mark में आएगा. ठीक है, जिस टेस्ट में 18 marks आ रहे हैं homework marks, उसमें हमारे पास median आएगा. If anyone has doubts, questions, please ask now, guys. Okay, let me know. Understanding? Yes. Guys, clear on this? Any Yes. Yes, sir. concerns up Clear. till now? Yes. We have solved. Can I get more responses? Okay, everyone, those who haven't responded yet. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, next we have to calculate the mean. So mean is not difficult in this. That's for 3 marks. Make sure they will definitely test these concepts. Okay. So median is the middle value. So I did the cumulative frequency and try to got it कि यहाँ पर तक 24 23 आ रहा है. We need to get to 25 5.5 position जो कि इस वाले में लाया करेगा. So इसका मतलब median is 18 marks. Okay. Mode is the most repetitive number. Most repetitive number is based on frequency. जिसकी frequency high होगी वही उसका mode होगा. What about the mean, sir? तो mean कैसे find कर लेंगे? Nothing but just आप इसको calculate करके add on करके find out कर सकते हैं, guys. Is everyone getting it clear? So it is nothing like, just mean is simple. Again the same thing. Easy mean कि frequency multiply by the variable plus frequency multiply by the variable 3 times of 16. Frequency multiply by variable. Frequency multiply by variable. Frequency 10 multiply by variable, and 6 into 20. What all of them are giving, just divide by the total number of 50 homework marks. Okay, that is what the answer will be. Okay, 15 times of 316 is 48, I believe, right? 15 plus 48. What is 1917, guys? Make sure don't mistake any silly mistake in the calculator. So you have to do it in the calculator. This calculator is allowed at the moment. Okay, 11 into 18, 10 into 19, and then you got it as 6 into 20. So we got that as 894, and 894 divided by 50 will be the answer. Okay, so 894 divided by 50, we got that as 17.88. Any doubts, anyone? Quickly, everyone got this right? Yes, sir. Guys, clear on Yes, this? sir. Okay, so we got this one as Yes, sir. 17.88. Okay. So we have done almost 17 point, and the last is very simple and easy. They are testing you on the stem and leaf diagram. Okay, that is shown in this information. So we have to do the stem and leaf diagram and find out median interquartile range as well. So let's quickly do that. The list shows ED scores in 11 tests. So this is the ED score in the 11 test, and we just have to do the stem and leaf diagram. So very simple. It will be starting with 11. So it will be 118 only, and one is only there. Okay, so it will be 18 only, sir. Then if we talk about 20s, okay, so it will be 20, 21, 22, 20, 21, 21, 25. So majority is coming here. That will be, sir, 20 and 20 and 21, 21, 22 and 25, right? So 1 here and 6 here. Okay, so 7 and 4 should be remaining coming here, which means I've missed out something. 20 is 2 times, 21 is 3 times. Okay, so 21 is 3 times. Make sure don't miss out. Okay, 22, 25. So this is 7, and this will be coming 3. That is 30, 33, and 34. Guys, got it? Everyone clear? 30, Yes, 33. sir. So that is how your stem and leaf diagram should look like. Then we talk about the median here. So median is crystal clear. Median is the 50% of the data. So it will be, sir, let's start from here. 50% of the data will be n plus 1. There are 11 observations. Hope everyone is following with me and getting it. Sir, there are 11 observations, and 11 plus 1 is 12. So 50% of 12 will be the sixth value that you have to go. So what will be the sixth value, students? It will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 is the median. Okay, everyone got it, guys? 21 is the median. That 21
21 score is the median, and then you have to find the interquartile range. It will go the same way. Interquartile is upper quartile minus the lower quartile. So upper quartile is 75% of the data, which is 75% of the data will be 75% of the 12. It will be 8, and you'll have to go to the, sorry, ninth value, I think, okay? Yeah, 75% of the data will be the ninth value. So you have to go to 12th value. So it will be the ninth value. Ninth value will be, sir, 30, right? 6, 7, 8, 9. Yeah, 30 is the upper quartile, guys. 30 is upper quartile, sir. And then you're going to find the lower quartile as well. Lower quartile will be the first, third value. Third value, that is the 3 value. So it will be 20. Okay, the 30 minus 20 is 10 is the answer, which is the interquartile range. Anyone have doubts? Let me know, guys. Now, anyone, any doubts, any questions? We can talk about them. Sir, No, sir. So this question is done, which is question number 2 on the statistics as well of the most recent paper, October, November 2023, paper 42. Yes, someone saying something? Any questions, guys? Question सर 1 is आपने done. 12 क्यों लिया, 11 क्यों नहीं लिया सर? नहीं, द रीजन इज कि हम इसमें n+1 जब ऑड नंबर्स होते हैं तो हम इसमें वन प्लस ऐड करके सॉल्व करते हैं, n+1 ओके ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करा हुआ है। मेक श्योर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसकी जरूर रिकॉर्डिंग देखें, ठीक है ना? ओके हमने सर, पहले भी n+1 ही लिया है, या मे भी वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें इवन होगा, तो इवन में नहीं लेते, ऑड में लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। Any doubts, anyone? Any questions? Question number 1 and 2 are done. Next, we have a very important and a good question. Okay, so 2 was easy, medium level of difficulty. 1 was hard level of difficulty because it's transformation. 3 is average. Okay, some parts are easy, some parts are difficult. One of the part is very difficult, so we'll have to understand that as well and learn that as well. Okay, so question number 3 is on the favorite topic of mine, that is ratios and percentages, proportion, or in just simple one word, we can, it's the daily life maths. Okay, getting it? Daily life of the maths. Okay, so that is basically question number 3 on basics of the maths, that is ratio, proportion, percentage, compound interest, depreciation, everything can come, profit loss heading, those things will come under this thing. Okay, so let's quickly talk about this question. Okay, is everyone there with me? Getting it, guys? Yes, sir. So it will be सर the value of Priya's car decreases by 10% every year. The value today is 7,695. Calculate the value of the car after 1 year. The value decreases by 10% each year. The value today. So it's a very simple, decent question, although they could have made it tricky as well. The value today is 7,695, and the value is decreasing by 10% each year. The value of the car, what will be the value of car after 1 year? So there are two options, students. You can do it in two ways. You can either find out directly 90% of this, because if the value of the car is 100% today, if the value of the car is 100% today, then 10% you will find out the amount, it will reduce by that, and then it will become 90%. Okay, so in percentage you deal. Okay, in percentage we deal कि अगर value of the car 100% थी, हमने 10% निकाल दिया उसमें से, so we got that at the 90% value, so it's coming 6,925.5, which is the correct answer, I believe, right? Okay, guys, got it? So directly भी solve कर सकते हैं, you will get both the marks. Okay, और the other method is कि आप पहले 7,695 का 10% निकालें और फिर उसको माइनस कर दें। मैं सेकंड मेथड भी जल्दी से कर देता हूँ ताकि if anyone is getting confused तो उनको ये भी आइडिया हो जाए कि 7,695 into 10% आप निकालोगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी 769.5। इससे वैल्यू डिक्रीज करनी है तो ये 2 स्टेप अप्रोच मार्किंग भी आप करके तब भी you can get the final answer as 6,925.5. This is the OR method. Okay, then calculate the value of the car 1 year ago. So this is a very important tricky question, guys. Follow carefully. देखिए, just a bit of wordings change है. So this is like an English question as well, English class as well, कि calculate the value of the car after 1 year. So which means कि next year की बात हो रही है. Calculate the value of the car 1 year ago, मतलब पिछले year की बात हो रही है, because it is decreasing now. That is why I believe in the ratio method and percentage method. कि now anyone can tell me what is this 7,695 equals to. पहले मैंने इसको 100% लिखा था, तो अब जो वैल्यू है 7,695 इज विच वैल्यू? 90% वैल्यू, गाइस, गेटिंग इट?
695 is 90% वैल्यू, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डिक्रीज हुई है फ्रॉम द लास्ट ईयर। जब अब हम लास्ट ईयर को, ओरिजिनल ईयर को हम कॉस्ट समझते हैं, ओरिजिनल ईयर को हम 100% समझेंगे, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू 7691 to 100, 7691 to 100 divided by 90, so you will get 8550 was the value 1 year ago, guys. Let me know how many got this correct. Make sure to check it again and see if you understood the concept, or if you made a mistake, you must be clear now. Okay, guys, let me know, understood this? Anyone, any doubts? Yes, sir. Understood. Any questions, anyone? Okay, very important. That's why my ratio method will work everywhere. Just need to understand कि जो value है उसका ratio कितना है. What we need to understand, students, is the value that we are using. Against that, what is the ratio of that? Okay, then next is what we have is basically Ali invests $600 at the rate of 2% per year, simple interest. We have to calculate the value of Ali's investment at the end of 5 years. So it's about the simple interest, sir. So it is very simple. K, we'll have to find out interest. The formula is PRT over 100, sir. So P is the principal, rate is basically 2%, number of years, the time period is 5 years, and that you divide by 5, that you divide by 100. Okay, so that's the formula, principal into the rate of interest into the number of years. So it will be 6 2s are 12, 12 5s are 60. So $60 without calculator. Make sure your mental maths is strong as well. $60 is the interest that she have Ali has, sorry, $60 in the interest that Ali have earned. Okay, but if you write down 60 there, it is wrong, because what's the question is asking, make sure, very silly common mistake, you have to find out Ali investment. Okay, what is the Ali's investment after 5 years? So it is basically, sir, 600. The amount will be 600 he invested, and $60 he earned, so it is $660, guys. That is the correct answer for this part. Okay, let me know everyone got this clear on this. Sure, no issues. Hello, wonderful, guys, clear on this? Any problem? Yes, sir, clear. Yes, Okay, sir. Clear. I'll just give you 2-3 minutes. आप इसको रिवाइज कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, फिर हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैव क्वेश्चन, दे कैन आस्क, गाइस. ओके, स्टिल 30 सेकंड्स, आई एम गिविंग मोर. किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लें, देख लें, कॉपी कर लें, अंडरस्टैंड कर लें. इफ एनीवन वांट्स टू कॉपी एज वेल, तो स्क्रीनशॉट ले लें.
ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वाला पार्ट और इम्पोर्टेंट है, and it's a 3 mark question. Everyone can hear me right, guys? Okay, so we have Sara invest $500. अली के बाद हमारे पास सारा आ गई है, ठीक है। $660 हमने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया था। सारा इन्वेस्ट $500 एट द रेट ऑफ R% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है अब, तो फॉर्मूला विल चेंज, एंड एट द एंड ऑफ 12 years द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज दिस, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट, and we have to find the value of the R. Okay, so we have to find the value of R, but which is the rate of the interest. Okay, so it will be, sir, that amount is equals to, so so let me write down the formula as well quickly for the students. Amount is equals to principal 1 plus R percentage to the power of number of years. So what we have, sir, the value of Sarah's investment is 601.35, principal is $500, मतलब उन्होंने $500 इन्वेस्ट करा और 12 साल बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, सारा ने इन्वेस्ट करे 12 ईयर्स के लिए $500, 500 इन्वेस्ट किए थे, $601.35 उनको 12 साल बाद अर्न हो गए। तो 500 इंटू 1 प्लस R% टू द पावर ऑफ n years, दैट इज 12 years. ओके गाइज, एवरीवन क्लियर? तो आपने इस तरह इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स, और फिर इसको सॉल्व करना है। दैट विल बी, मेक श्योर, ये बहुत कॉमन है, इससे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस R% हमें पता नहीं है, टू द पावर ऑफ 12। ओके, इज एवरीवन गेटिंग इट? इज एवरीवन गेटिंग द, Yes, मैंने sir. जो फॉर्मूला Yes, अप्लाई sir. करना है वो इस तरह होगा। नेक्स्ट विल बी, सर, कि हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें पावर्स को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन पावर, तो आप इसको 12 इंटू 1/12 कर देंगे ताकि ये पावर कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर आ जाएगा 1/12 पावर। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि R% इज इक्वल्स टू, R% को आप यहीं छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। मेक श्योर कि आप जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है कि पहले आप कैलकुलेटर में सॉल्व ना करें, पहले सब कुछ फॉर्म कर लें और फिर कैलकुलेटर फॉर्म करें। तो दिस ब्रैकेट विल हैव पावर ऑफ 1/12 and you will subtract 1 from it, which will give us the R%. Okay guys, that is the percentage. सब आप कैलकुलेटर में करेंगे पूरा एक साथ सॉल्व। Okay guys, hope everyone got this right. So 601.35 divided by 500 to the power of 1/12, and it will be -1. So I'm getting something 0.0, whatever the answer you're getting, just multiply by 100. So it will be, sir, 1.54999. So one decimal place also you can give, or two decimal here. That is 1.55%. Okay, guys, everyone got it clear? Better to give two decimal places the answer here, क्योंकि आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है 1.549996. So better to round off to two decimal places, that is 1.55. इसे हम 3 significant figures भी कह सकते हैं फिर, ठीक है guys? Is everyone got it clear? Moving forward to the next page quickly, guys. Yes, sir. Clear. सही है? Yes. So this is part C done. Okay, next we have is basically the mass of the radio. This is very important part. Okay, so I can say, follow carefully. A, B, and C were easy, not difficult. Medium level of difficulty or easy level. For me, it is easy. For students, I can say medium level. But these are hard questions. Okay, from part D onwards, and almost everyone got it wrong. When I was checking your paper, students, almost everyone got this wrong. So this is what you have to follow carefully. Yeah, at least one part minimum students got wrong. Okay, so the mass of a radioactive substance decreases exponentially. The mass of a radioactive substance, forget what is radioactive substance, something chemistry physics terms, I don't know about it at all, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, दैट इज मैथ्स टर्म, दैट इज व्हाट आई नो अबाउट इट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये परसेंटेज वाइज में डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3% ईच डे। इज एवरीवन गेटिंग इट? सो दिस इज डिक्रीजिंग बाय 3% ईच डे एवरी डे। I have to find out overall percentage decrease at the end of 10 days. So students, I have to find the overall percentage at the end of the 10 days. So what I'm going to do, follow carefully. Basically, I will imagine कि पहले जो मास था ऑन डे वन, $1 का मास, सॉरी 1 मास था, ठीक है, लेट से 1 ग्राम था, जो भी था ऑन डे वन, द मास वाज 1 ग्राम। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम के 1 के अंदर मैंने 3% एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करना है। तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम होता है। इट्स जस्ट कि यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंक्रीज होगा, और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। गाइस गेटिंग इट? क्योंकि सर वो एक्सपेंस, और इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, वो नंबर ऑफ डेज हो गया है। सही है? हम अज्यूम करें कि जो अब जो है वो नंबर ऑफ डेज हो गया। गाइस गेटिंग इट? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 3% टू द पावर ऑफ 10। तो ये बेसिकली आ गया 0.737। इज एवरीवन गेटिंग इट गाइस? क्लियर है बात? फॉलोइंग? ठीक है,
इज एवरीवन गेटिंग दैट? Yes. 0.737, ये मैं इमेजिनेशन करके कर रहा हूँ कि जब मेरे पास, जब डे वन पे फॉलो करेगा सर, डे वन पे मेरे पास उसका जो मास था वो 1 ग्राम था, या मास जो भी था ग्राम में था, जिस भी मेजरमेंट में था 1 ग्राम था। और डे टेन पे मास हो गया डिक्रीज हो के एक्सपोनेंशियली 3% डिक्रीज हो के वो 0.737 ग्राम्स बन गया है। डे टेन पे डिक्रीज हो के 10 डेज के लिए 3% टाइम 3% रेट पे वो डिक्रीज हो रहा था। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, आंसर 0.737 नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि परसेंटेज कितना डिक्रीज आया, परसेंटेज पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कि जो हाउ मच इज द डिक्रीज, ओके। सो 0.377 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 1 थी, और इनटू 100, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज डिक्रीज है। एवरीवन गेटिंग इट गाइस? हेलो? यस सर। तो अब ये और भी मेथड से हो सकता है, या आपको जो सही लगे उस तरह करें। आंसर आएगा 26.3%, विच इज 100% करेक्ट, ओके। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर शार्प स्किल्स हैं, या मेक श्योर करें कि एग्जाम में एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल क्योंकि आप ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो एग्जाम्पल करेक्ट भी और वैलिड भी, और वो उसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कराओ। फिर सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ होल डेज, it will take until the we have to find the number of whole days it will take until the mass of this substance is one half of its original amount, ठीक है। So what we have to do now, कि we have to find the number of whole days it will take until the mass of this substance is one half of its original amount, के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। फॉलो वेरी केयरफुली सर, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, विच मीन्स कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। मैंने दोनों को रेड लाइन से मेंशन कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ होल डेज इट विल टेक द मास टू बिकम वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। तो वही हो जाएगा सर, यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल से करूंगा कि ओरिजिनल अमाउंट है सर 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल अमाउंट 1 है। या ओरिजिनल अमाउंट आप ले लो एक्स, बेटर है, ओरिजिनल अमाउंट एक्स ले लो। और अमाउंट बननी क्या है, हाफ एक्स बननी है, इज वन हाफ बननी है ऑफ इट्स। मिसाल के तौर पे अगर 100 अमाउंट है, तो वो क्या चाह रहा है कि 50 बन जाए, राइट गाइस? अगर जो मास है वो 100 ग्राम्स था, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो कितने दिनों में 50 ग्राम्स बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन की एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक वैल्यू में। आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। जो ओरिजिनल अमाउंट है, लेट्स से अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 ग्राम्स थी, कितने दिनों में वो हाफ हो जाएगी उसकी? 100 का हाफ क्या होता है? 50। तो 100 ग्राम्स कितने दिनों में फिर आधे हाफ एक्स हो जाएंगे? गेटिंग इट गाइस? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? सर इक्वेशन बन जाएगी x टाइम्स ऑफ 1 - 3%, what we don't know is power of n is equals to half x। स्टार्टिंग में ओरिजिनल अमाउंट x थी, उसका हाफ x कितने में बन जाएगा? तो ये चीज है गाइस। एवरीवन गेटिंग इट? क्लियर हो गई बात? यस सर। हेलो? तो अमाउंट कुछ भी हो, x और x कैंसिल हो जाएंगे वहां जाके। तो आप ये कहोगे कि सर मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 - टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू 0.5। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले 1 - 3% को। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ आपको, कि अगर इस तरह वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें पावर फाइंड करनी है, एवरीवन गेटिंग इट गाइस? देखिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत रेयर आते हैं। एवरीवन देयर? फॉलो करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बट रेयर आते हैं, इन विच वी हैव टू फाइंड द पावर, दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस। के क्वेश्चंस आते हैं बट पावर की फॉर्म में कम आते हैं, पावर फाइंड आउट करनी है। तो ए लेवल मैथ्स में, या हम ये कह सकते हैं कि एडिशनल मैथमेटिक्स में, तो बहुत ईजी मेथड है लॉग्स का। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप वो भी अप्लाई कर सकें। आपके सिलेबस का नहीं, आप शो नहीं कर सकते, ठीक है? आपने लॉग्स को शो नहीं करना है। अपने आंसर के लिए, चेकिंग के लिए, कि सर ने समझाया था, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, या साइड में वर्किंग कर लें, क्योंकि ये कैलकुलेटर अलाउड क्वेश्चन है। साइड में वर्किंग करके पेंसिल से रिमूव कर देगा। मेक श्योर कोई शो नहीं करेगा, बिकॉज ये अलाउड नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है लॉग्स, ठीक है? इज एवरीवन गेटिंग इट? मैं आपको यस सर। सेफ साइड बता रहा हूँ। पावर ऑफ एन निकालना हो तो किस तरह निकाल सकते हैं? जो मार्किंग स्कीम का मेथड है, या जो ऑफिशियल मेथड है, वो है ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड का मतलब क्या होगा कि आप वैल्यूज ट्राई करके देखते रहें, कुछ वैल्यूज अज्यूम करें और देखते रहें। जैसे कि एक तो वैल्यू ये हो जाएगी, आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 डेज से ऊपर वैल्यू होगी, गाइस गेटिंग इट? पहला तो आइडिया आपको ये होना चाहिए, पहला आपको ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स समथिंग थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, कि आंसर जो है वो 100% 10 से ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें 50% डिक्रीज चाहिए। अगर वन से 0.5 पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज 50% का है। तो हमें ज्यादा डिक्रीज चाहिए, तो 26.3% डिक्रीज आया, हमें ज्यादा डिक्रीज चाहिए। तो कॉमन सेंस बता रहा है कि क्या आंसर होगा। अगर आप देखें, अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, ट्रायल मेथड क्या होगा कि सर 10 डेज में कितना हुआ? 10 डेज में
26.3% डिक्रीज हुआ है गाइस। गेटिंग इट? बात समझ आ रही है? 10 डेज में 26.3% डिक्रीज हुआ है। अगर आपको 50% डिक्रीज चाहिए तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज भी लग सकते हैं, राइट गाइस? डबल हो सकता है, राइट? तो यस आंसर सर। 20 के आसपास होगा, तो 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 21 होगा, आंसर इसके आसपास होगा। तो मैं इसलिए इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना? इज एवरीवन गेटिंग इट गाइस? बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल में जरूरी नहीं कि ऐसे हो। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लॉग्स अप्लाई कर लें। कैलकुलेटर में लॉग का बटन है, इस तरह करके लॉग आ रहा होता है, सही है? तो वो आप लॉग अप्लाई कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल्स टू लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय लॉग, ये पावर जो पीछे रहती है, और लॉग डिवाइड हो जाएगा। 0.5 डिवाइड कर देंगे लॉग 0.97 से, सो n की वैल्यू आ जाएगी लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय लॉग 0.97, तो ये आ जाएगा 22.75। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने मिनिमम डेज लगेंगे। तो आपका आंसर एक आगे होगा, दैट इज 23 डेज विल बी टेकन, और 23 डेज इसका फाइनल आंसर होगा। गाइस गेटिंग इट? कि 23 डेज लगेंगे टू गेट द वैल्यू, हाफ ऑफ इट द वैल्यू, ओके? तो ये हो गया एक लॉग वाला मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड जो एड मैथ्स पढ़ते हैं उनको क्लियर होगा, या नहीं पढ़ते तो मैंने समझा दिया, ए लेवल में आता है। जो ए लेवल मैथ्स लेंगे उनको एक आइडिया हो जाएगा, याद रखिएगा मुझे जब, तो आपको आइडिया हो जाएगा, सही है? तो एड एक्सेल में लें या उसमें लें, कैमरेज में लें, तो एक ही बात है। 23 डेज इसका आंसर आ रहा है। व्हाट वी नीड टू क्लैरिफाई, ठीक है, ये इसको अभी साइड में कर देते हैं। नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है, वर्क इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने खाली सेफ मेथड बता दिया कि आपको बताना चाहिए क्या करना है, याद कर लें इसको। ये वाले नंबर को लॉग करके डिवाइड करेंगे, ये वाले नंबर के लॉग से, ये वाले नंबर को लॉग करके डिवाइड करेंगे ये वाले नंबर के लॉग से, सिंपल। अभी ट्रायल मेथड से कैसे होगा कि मैंने आइडिया कर लिया कि 20 डेज के आसपास वैल्यू होगी, तो मैं वैल्यूज पुट करके देखूंगा कि 0.97 टू द पावर ऑफ 20 कितना आ रहा है, 0.54 आ रहा है, तो वो उससे ज्यादा जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? हमें हमें चाहिए कि कम वैल्यू हो, ठीक है? तो 0.97 टू द पावर ऑफ 23 करेंगे तो वो आ जाएगा 0.49। गेटिंग द पॉइंट गाइस? क्लियर है? यस सर। सही है। तो वैल्यू करके देखेंगे 20, 21, 22, 18, 19 करके देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। गाइस गेटिंग इट? क्लियर हो गई बात? तो मेक श्योर जरूर स्क्रीनशॉट लें, इसको टैकल करें, क्योंकि ये बहुत हार्ड, ये जो पार्ट सी और पार्ट डी है वो काफी डिफिकल्ट था, ट्रिकी था। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, ठीक है? 9 questions are done, 3 questions are left, which means 75% of the paper is done up till now. Is everyone clear? So moving Yes. यस forward, सर। what we need to understand, it's a very good question on mensuration, a very tricky, one of the most hardest भी कह सकते हैं। सारे parts अच्छे हैं। There are 1, 2, 3, 4 parts. So all the parts are important. तो इसमें हम टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, कि डिटेल में डिस्कस करेंगे कि mensuration कैसा है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट 2-3 टाइम्स करा चुका हूँ आप स्टूडेंट्स सबको। आई हैव डन द फर्स्ट पार्ट 2-3 टाइम्स, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नो वन विल मेक अ मिस्टेक इन दिस, क्योंकि ये वही है कि सेक्टर को कट करके कौन बना रहे हैं, और ये रिसेंट पेपर्स में आ रहा है, 2022 में भी आया था, 2020 में भी आया था, आई थिंक, या 2021 में आया था। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन एज वेल, तो मेक श्योर ये जरूर रिवाइज करके जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4, मेंसुरेशन। इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स उसी वक्त पूछ लीजिएगा, स्टॉप करके उसी पार्ट में, सही है? द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल दैट इज मेड इनटू अ कोन by joining OA to AB. The sector angle is x, radius is given, radius of the sector is given 7.5, the radius of the cone is 1.5, we have to calculate the value of x. तो मैंने आपसे कहा भी था कि इसका बेसिक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि सर ओ ए को कट करके ओ बी के साथ जाके मिला दिया तो हमारे पास ये कोन बन गए। और ये कोन का क्या पार्ट है, जो सेक्टर था, सेक्टर जो है बेसिकली वो कोन को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है? सेक्टर सर कोन को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एवरीवन नोज कि क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमें, तो हम ये कहेंगे कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है दैट इज एंगल ओवर 360 इनटू एरिया ऑफ द सेक्टर। गाइस सब फॉलो कर रहे हैं? सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, ये होगा कि आर्क लेंथ, ठीक है? आर्क लेंथ जो होगी ना, फॉलो करिएगा, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, जो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, हमने पढ़ा था कि जो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर होगी वो बराबर हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के, क्योंकि ये पूरा कट होके उसका सरकमफ्रेंस बन जाता है। गाइस इज एवरीवन गेटिंग इट? इज एवरीवन क्लियर? तो बस यस सर। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा, अगर आप भूल भी जाएं इस टॉपिक को तो कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला याद रख लें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कटिंग वाला, कटिंग वाले का मतलब है कि वो एक शेप को कट करके सेकंड शेप फॉर्म कर रहा है। ओके एवरीवन, guys getting it? So it will be यस arc सर। length of the sector, that is x over 360 degrees into pi, sorry, into 2 into pi into radius, that is 7.5, is equals to circumference of the circle 2 times of pi
into the radius, सब कुछ given है, ठीक है. Radius of the cone पता है sir 1.5 है. Radius of the sector पता है 7.5 है. Is everyone with me? Can I get everyone to respond? Hello. Yes, sir. Yes, sir. तो आप solve कर लें Yes, sir. sir, simple हो गया. 2 and 2 cancel, pi and pi cancel, तो ये हो जाएगा सर सिंपल के 7 पॉइंट रेड कलर में कर लेते हैं सर. 7.5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ 360. सो x इज इक्वल्स टू 360 इंटू 1.5 450 540 हो जाएगा. 540 डिवाइडेड बाय 7.5 is your angle. Okay students, that is coming 72 degrees, which should be correct as well guys. Okay, everyone got it? No doubts, right? No questions? Yes, sir. Make sure, I'll repeat my point again, do revise this paper before going in the exam, which means one day before you should have to revise this exam paper, okay? Especially question number 4, mensuration question, okay? So this is coming 72 degree. Next we have part B, sir, a very important good question. Hai easy, okay guys, 2 marks ka hai. The diagram is showing a cylinder with the radius 8 centimeter inside a sphere of radius 17 centimeter. The diagram is showing a cylinder. Cylinder का radius बता रहे हैं और sphere का radius बता रहे हैं. Both of them are touching. Both of them are touching each other. And what we have to do is, sir, show that the height of the cylinder is 30 centimeter. Is everyone there with me, guys? Getting it? Height of the cylinder is 30 centimeter. Is everyone getting the point? So, Yes. Yes, sir. question tricky nahi hai. What we need to clarify and understand here is very important point कि आपको इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पर. और आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें अगर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. देखिए आपके पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके दोनों के रेडियस अवेलेबल है. तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं कोन का रेडियस अगर यहाँ ले लूँ, सॉरी साइलेंडर का रेडियस यहाँ ले रहा हूँ, दैट इज 8 सेंटीमीटर. गाइस फॉलो करें. साइलेंडर का रेडियस यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, रेड कलर फॉलो करेगा, यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, सब जगह एक ही होगा. तो मैं अबव या टॉप पे ले लेता हूँ कि सर जो साइलेंडर है उनका रेडियस होगा 8 सेंटीमीटर. गाइस गॉट इट? Is everyone clear? Understood with me? Following 8 centimeter is the radius of the cylinder. Guys, getting it? Clear हो गई बात? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हमें अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि जो है वो स्पेयर का रेडियस है 17. अब देखें नॉर्मली क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है स्पेयर क्योंकि बीच में हो रहा है तो स्पेयर का रेडियस यहाँ ले लेंगे. ठीक है सर, ये 17 हो गया. लेट्स अज्यूम कर लेंगे कि ये इसका सेंटर है और ये 17 हो गया. ब्लू कलर में कर रहा हूँ या इसको ग्रीन कलर में कर लेते हैं. तो रेडियस ये हो गया, रेडियस ये हो गया. ठीक है. तो अब प्रॉब्लम ये है कि हाइट कैसे निकालेंगे सर? हाइट तो ये होगी सिलेंडर की, राइट स्टूडेंट्स? हाइट कर लेते हैं ब्लैक कलर में. इज एवरीवन विथ मी कि सर हाइट हो जाएगी ब्लैक कलर में ये वाली? एवरीवन देयर फॉलोइंग? हाइट हो जाएगी ब्लैक कलर में ये वाली. तो अब ये कैसे फाइंड होगा? तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन प्रॉपरली यूज करनी है कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर ये तो रेड कलर तो पता है, रेड कलर तो सही है, लेकिन इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि स्पेयर क्या होता है? स्पेयर इज इन द शेप ऑफ बॉल, राइट? टेनिस बॉल होती है, स्पेयर एक बॉल की शेप में होता है. तो ऑलमोस्ट सर्कल जैसी प्रॉपर्टीज हैं और सर्कल से एसोसिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो सर्कल का सेंटर होता है बीच में से स्टार्ट और रेडियस हर जगह होता है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये बेसिकली ना देखा जाए तो इट्स अ डिसगाइज क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा डिसगाइज क्वेश्चन है कि बेसिकली आपका पाइथागोरस थ्योरम टेस्ट कर रहा है. एवरीवन गेटिंग इट? कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो स्पेयर का रेडियस होगा. इज एवरीवन गेटिंग इट? Yes, दैट्स व्हाई sir. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद Yes, दिस sir. क्वेश्चन कि ये जो रेडी ये आप इसको लेकिन ये एग्जाम में क्लिक नहीं होगा. मुश्किल है ना एग्जाम में क्लिक होना, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल है क्लिक होना, प्रेशर होता है एग्जाम में. तो मेक श्योर कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स का तो आपने टाइम स्पेंड नहीं करना इतना. अगर हो जाए उस वक्त तो फौरन क्लियर होना, बाद में ट्राई करेगा, क्योंकि ये बी पार्ट है और नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट 2 है. तो आप आगे बढ़ के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इससे हेल्प लेके भी सॉल्व कर सकते हो. आपको पता है कि आंसर पता है. बेस्ट बात क्या होती है? जब आपको आंसर पता है, आपको खाली प्रूफ करना है. तो अगर वाला पार्ट ना हो, बी पार्ट 1 ना हो, टाइम वेस्ट ना करें, बी पार्ट 2 कर लें, ज्यादा मार्क्स का है, 4 मार्क्स और आसान भी है. बी पार्ट 2 कर लें, 4 मार्क्स के बाद में आन के देख लिएगा कि कैसे प्रूफ करना है. ठीक है गाइस? मैं फिर रिपीट कर, तो ये आ जाएगा बेसिकली हाइट, लेकिन ये आधी हाइट आएगी, इसको डबल कर देंगे तो पूरी हाइट आ जाएगी. इज एवरीवन गेटिंग इट गाइस? रिपीट करने Yes, सबको sir. समझ आ गई बात? सो इट विल बी 17 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम माइनस द 8 स्क्वायर. तो सर वो बेसिकली आ जाएगी हाइट, height height of the square. So 17 square minus the 8 square, तो ये आ गया सर 225 as the height square. और it will be square root of 220, 15 होता है, right? So 15 centimeter is the radius, or simple this one. So height of the cylinder will be double of that. 2 times of 15 will be 30 guys. Okay, understanding? Clear with me?
ये आधी हाइट आ Yes, गई ना, sir. ये आधी हाइट अगेंस्ट जो जो आपका वो है साइलेंडर है वो पूरा है गाइस, ठीक है, एवरीवन गेटिंग इट, साइलेंडर से पूरा है अबव से लेकर डाउन तक, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव प्रूव्ड। एनी डाउट्स एनीवन, एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो गाइस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. नो डाउट्स, ओके। सो पार्ट ए और पार्ट बी हो गया, आई गिव कपल ऑफ सेकंड्स, ओके, 10-15 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, रिवाइज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका नेक्स्ट पेज सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट 5, 9 एंड 12 मार्क्स अगेन, ओके। मेंसुरेशन का 12 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आया था 2, 4, 7, 10, 12, 15 मार्क्स का बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आया, 15 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स थोड़े कम मार्क्स था, 2, 5, 6, 7, 8, 10, ये भी 11। सो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज ईच क्वेश्चन इज 10 to 15 मार्क्स, ओके, बिटवीन 10 to 15 मार्क्स इन पेपर 4। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है, एवरीवन गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है? Yes, sir. Yes. Once we got 4 part A, 4B, so we are moving to the next part, okay, that is वो थोड़ा सा इजी है, वो आपको बेसिकली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही टेस्ट करेगा, फिर भी एक मिनट और स्पेंड कर लें, आई वुड वांट एवरीवन की एब्जॉर्ब कर लें, दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी हैं, तो फिर हम टॉप करेंगे इस पे, ठीक है। Okay, ji. So let's continue. What we have is basically, sir, we have to calculate the volume of the cylinder as the percentage of the volume of the sphere. Okay, so we have to calculate, sir, volume of the cylinder as the percentage of the, बहुत simple है, volume of cylinder is percentage of volume of sphere. So sir, हम volume of cylinder निकालते हैं students, क्योंकि हमारे पास height है, सब कुछ given है। volume of cylinder का formula क्या है? Pi r square height. Okay, make sure everyone knows this, pi r square height. So pi into the radius. Radius is 8 centimeter for the cylinder. Height is basically 70. Height was the cylinder 30 centimeter. अभी हमने find out करा, तो make sure आप कर लें 30 into 8 square. That is 1920 pi. I would suggest कि आप pi की फॉर्म में लीव करें, हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट आंसर निकालें तो एंड में कर लेंगे। सर वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर निकाल लिया, इस तरह वर्किंग भी शो कर सकते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ वर्किंग, ताकि प्रॉपर वर्किंग लगे। टाइम आपके पास होगा, मेक श्योर एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपने पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट करने, जो टॉपिक आपको आसान लगता है। उन्होंने आपके आसान करने के लिए वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, वैसे आप देना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी दिया हुआ है आपको, सही है, आपके आसानी के लिए, स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्क्वायर? 17 सर। तो ये हो जाएगा बहुत ही सिंपल, तो बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हैं आप, सिर्फ आपने साइलेंडर के ऊपर स्क्वायर रखना है गाइस, एवरीवन विथ मी, फॉलो कर रहे हैं? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने टाइम स्पेंड नहीं करना, आप 2 मार्क्स के लिए वेट करते रहेंगे और आगे सारा आप पे बर्डन आ जाएगा पेपर का, सही है। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 20,579, ये एक सेकेंड, 20,579.5, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सर वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर as the volume of spare, volume of spare into 100, that's the percentage that we are going to get, guys, everyone clear? Hello? Yes, ये sir. भी हो गया guys, any questions? So आ रहा है 29 point something 31%, so 1 decimal place round off कर देंगे because 3 significant figures हो गए हैं। तो I believe the final answer to get the 4 marks it will be 29.3%। और यहाँ पर मैं आपको मार्क्स का स्प्लिट बता दूं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए, कॉमन सेंस है। 1 mark for volume of cylinder, 1 mark for volume of sphere, 1 mark for applying the percentage formula, and 1 mark for the final answer। Getting it guys, clear हो गई बात? That's how 4 Yes. mark split is there, okay? 1 mark Yes, for sir. volume of cylinder, 1 mark for volume of sphere, 1 mark for formula applying, and 1 mark for the final answer, okay? नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट सी, अराउंड 4-5 मार्क्स का होना चाहिए, 3 मार्क्स का, ठीक है, ओनली फॉर 3 मार्क्स, ओके। तो द डायग्राम शोज अ सॉलिड स्फीयर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इनसाइड अ क्यूब। सो एक सर क्यूब आ गया है, और क्यूब जो है वो वाटर कंटेन करता है टू अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। स्फीयर को जो है वो रिमूव किया जाता है, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू डेप्थ ऑफ वाटर इन द क्यूब। Everyone getting it? So I've read the question very quickly. Sir, we have to find the new depth of water in the cube. तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लें, पहले तो ये पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है। एनीवन इन सिंपल वर्ड्स क्या फाइंड करना है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यू डेप्थ ऑफ द वाटर? तो सर हमने सिंपल वर्ड्स में क्या फाइंड करना है? एनी वॉलंटियर? हमने न्यू हाइट फाइंड करनी है, इजी वर्ड्स में कर लें क्वेश्चन को कन्वर्ट, ठीक है।
और ये बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है। लेट मी एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है? तो आपको क्लियर समझ आएगा क्या कहना क्या चाह रहा है वो। टेक अ ग्लास, उसमें आइस क्यूब डालेंगे, पानी, इट हैज वाटर, उसमें आइस क्यूब डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो जो हाइट होती है, अगर आपका ग्लास हाफ फिल था, इफ योर ग्लास वाज हाफ फिल, तो जब हम देखते हैं कि जब वो आइस डालते हैं कोल्ड ड्रिंक में भी, किसी चीज़ में भी, तो जब आइस डालते हैं तो ऊपर उसकी जो वॉल्यूम है वो ऊपर आ जाता है, राइट? वॉल्यूम या लीटर या कैपेसिटी उसकी ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर यही हो रहा है कि इट्स, लेट्स से कि ये एक्वेरियम है, ठीक है? एक्वेरियम टाइप शेप है या क्यूब है। क्यूब के अंदर एक बॉल डाल दी, स्पेयर डाल दी, तो वॉल्यूम का वाटर जो है वो ऊपर आ गया होगा। अब वो उसको स्पेयर को निकाल रहे हैं, बॉल को, टेनिस बॉल को निकाल रहे हैं या स्पेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो गया होगा। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर हो कि सर, जब जब वाटर, जब वो जो जब शेप जो है, आर बेसिक नॉलेज शुड बी क्लियर सर, कि जब ये जो स्पेयर जो है, इज एवरीवन गेटिंग इट? ये जो स्पेयर है, ये जो स्पेयर है सर, ये बेसिकली पहले से पानी के अंदर था, तो तब हाइट थी 15 सेंटीमीटर। हाइट थी 15 सेंटीमीटर, या डेप्थ ऑफ द वाटर थी, डेप्थ या हाइट एक ही बात है। डेप्थ ऑफ द वाटर या हाइट वाज 15 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर व्हेन द बॉल और व्हेन द सॉलिड स्पेयर वाज इन द क्यूब। बट जब इसको बाहर निकालेंगे, बिकॉज वी आर रिमूविंग इट, तो लेट मी नो के वॉल्यूम हाइट जो है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? एनीवन? हाइट डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स? Decrease. Decrease. डिक्रीज होगी, राइट? सो इट्स एन एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशन। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हेन यू हैव टाइम, डू मेंसुरेशन एट द एंड, ताकि आपको कॉमन कॉन्सेप्ट भी हो, क्योंकि एट टाइम्स के माइंड वर्क नहीं कर रहा होता, एग्जाम प्रेशर होता है। तो आप कॉमन सेंस यूज करिएगा कि भाई, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो मेरा आंसर 15 से कम आना चाहिए, तो हमारा आंसर 15 से कम आएगा, ये तो 100% गारंटी है, क्योंकि जब हम बॉल की स्पेयर निकालेंगे तो आंसर 15 से कम आना चाहिए। जो भी आंसर आए, 10, 11, 8, 7, 5, 6, 5.5 समथिंग, वो जो भी है, लेकिन 15 से आंसर कम आएगा, बिकॉज हमें हाइट ऑफ द वाटर निकालना है। तो सिंपल वर्किंग होगी कि हम कहेंगे कि भाई, अभी क्या वॉल्यूम है? तो करंट वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो मेक श्योर तुमको बताना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू द लेंथ, ओके? सो इट विल बी लेंथ इंटू विद इंटू हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है? सो इट विल बी 20, क्योंकि ये स्क्वायर है, राइट? इट्स अ क्यूबॉइड विद साइड लेंथ, सर ये 20 है और ये भी 20 है स्टूडेंट्स, ठीक है? ये स्क्वायर है ना, क्यूब के अंदर स्क्वायर बना, तो इट विल बी 20 इंटू 20 इंटू 15, ओके? होप एवरीवन नोज दिस एंड गेट दिस, कि 20 इंटू 15 हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 6,000 centimeter cube is the volume, okay? The volume of cube is 6,000 centimeter cube। और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में से हम माइनस कर देंगे, स्टूडेंट एवरीवन इज फॉलोइंग गाइस, के Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है वो बेसिकली आ रहा है कि 4/3 इंटू पाई इंटू द रेडियस दैट इज ऑफ 6 क्यूब। सो ये आ जाएगा सर 4/3 इंटू पाई इंटू द 6 क्यूब। तो ये आ गया 288 पाई, ओके? 288 पाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि जब हमने, अब आ गया कि आफ्टर रिमूविंग, हमने रिमूव कर दिया सर, जब हम रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 6,000 माइनस 288 पाई, एम आई करेक्ट? वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? 6,000 माइनस 288 पाई। तो जो भी आ रहा है, दैट इज द वॉल्यूम आफ्टर द क्यूब इज बीइंग रिमूव्ड, ओके? दैट इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम सर, 5,095.221316 पूरा लिख लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम आफ्टर, ओके? तो ये वॉल्यूम आफ्टर हो गया। तब आप क्या कहेंगे कि देखें, अब जो न्यू वॉल्यूम होगा उससे आप कंपेयर कर लेंगे इसको, कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का। अगर हम बात करें न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो इट विल बी सेड के, देखिए बेस तो सेम रहेगी, विद भी सेम रहेगी, हाइट डिफरेंट आएगी, हाइट ये वाली कम हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू से इट विल बी, कि मुझे पता नहीं है कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा, 20 इंटू 20 इंटू हाइट। तो आप इससे कंपेयर कर लेंगे, गेटिंग इट गाइस? आप इसको इस वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, होप स्टूडेंट्स गॉट इट, कि जो न्यू वॉल्यूम है आफ्टर रिमूविंग वो कैसा आएगा, 20 इंटू 20 इंटू हाइट। जो न्यू हाइट होगी तो वो हाइट आप निकाल लें, वही आपसे पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ निकालनी है आपने। तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इट विल बी 5,095.22 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20, दैट इज 400। सो आप इसको डिवाइड कर लें तो हाइट इज गोइंग टू कम स्टूडेंट 12.73। देखिए न्यू डेप्थ ऑफ द वाटर रिड्यूस हो गए, 15 से रिड्यूस हो गए 12.7 भी लिख सकते हैं, 12.7। आई थिंक आई स्टॉप विद द to the one decimal place because of three significant figures answer to give.
Is everyone clear with me, guys? Got it? Anyone, any questions? Let me know. 12.7, we have got this answer as well. Anyone with doubts, any questions? Let me know. Question No, number sir. 4, mensuration is done. Okay. Is everyone clear? Crystal clear, right? Yes, sir. ठीक Yes, है जी. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now only 2 questions are left. So this one will be doing it very quickly as well, as this is easy question, 3 marks, okay? Must have done it by now, but some students find this chapter difficult as well. This is called algebra word problems. Make sure revise question number 4 and ask me any questions if you have algebra word problems. So let's try to increase the pace now, as it is not tricky difficult. But if anyone doesn't get it, ask the question now at that stage, okay? In a shop, the cost of a fiction book is X dollars and the cost of a reference book is X plus $2. So there is no need to make an equation as well. Already they have given. So it's a practical life word problem. In the shop, the cost of the fiction book is X dollars. The cost of 11 fiction books is equals to the cost of 10 reference books. So it's very simple. We have to find the value of X very quickly. Let's do this, sir. Find the value of X. That is going to be, okay, we can say, sir, that that 11 fiction books will be costing, if one books cost X dollars, 11 fiction books will cost 11X dollars. And if one reference books cost X plus $2, so 10 reference books will cost X plus 10 times of X plus 2. So just have to equate that and get the value. Guys, understood? So it will be 10X plus 20. So 11X minus X is X. X is equals to $20. Is Sir, it correct? Right. So it will be, yes, go on. 10x square, not 10x. 10x स्क्वायर नहीं होगा, 10x ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा. स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भाई? 20 is the answer for part 1. Okay. क्या कंसर्न है? पूछे पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर रिपीट कर देता हूँ. The cost of 11 fiction books, cost of the 11 fiction books will be 11x because one book's cost X dollars. So 11 times of X will be 11x. And the reference books cost X plus 2. It is the same means, the word same means equals to, okay? The word same means equals to the cost of 10 reference books, that will be 10 times of X plus 2, okay? So 10x plus 20 ho jayega. Understood? Got it clear on this? Yes, Guys, sir. any doubt? Okay, the next part is, in another shop, the cost of the fiction book is Y dollars. The cost of the reference books is Y dollars. Maria spends $95 on fiction and 147 on reference books. What they are testing you on is the simultaneous equations. You have to make 2 simultaneous equations, guys. Okay, so it will be that if Maria is spending $95 on fiction books and the cost of the fiction book is basically Y dollars, she is buying a total of 12 books. Follow karega very carefully. I am making the equation. Okay, students, I am making the equation. Total number of books are 12. तो मुझे बताएगा, if one book is costing Y dollars or Maria is spending $95, if I have to find out how many books is coming, what I will do it is basically the total amount spent $95 divided by per unit book will give me number of books. Guys, getting it? Everyone clear? सही. इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि इफ यू आर बाइंग 12 बनानास और वो आपको $120 के 12 बनानास दे रहा है, तो आप इजिली कॉस्ट निकाल सकते हैं कि एक बनाने की कॉस्ट $10 है. सही है? गेटिंग इट गाइस? एक बनाने का कॉस्ट 10. तो वही हमने ऑपोजिट वे में करना है कि वी नो यू गो टू अ शॉप, सुपरमार्केट, एंड यू हैव स्पेंड $95 ऑन द बुक्स and one book is costing Y dollars. So how many books can you purchase? How can you calculate? आपके पास $95 ही है. Let's say your parents have given you $95. बुक्स तो कोई लेता नहीं आजकल, लेकिन चले मान लेते कि बुक्स ले लिया आपने. तो $95 की आपने बुक्स ले लिया है, ठीक है. और अब कितनी बुक्स आ सकती हैं उसमें, तो आप डिवाइड कर देंगे एक बुक की प्राइस है जो कि Y डॉलर्स है. तो 95 डिवाइड बाय Y डॉलर्स will be the book, and then $147 for the reference books. ठीक है. So 147 divided by Y plus 2, this will be equals to total 12 books. So this is the most important thing of this part B, which is quite tricky as well, or someone might not be able to judge it in the exam time period. Make sure try to practice on this, ठीक है? बिकॉज ये प्रूफ तो हो जाएगा, जब तक आप इक्वेशन बना नहीं पाएंगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा. मेक श्योर फिर भी ये 4 मार्क्स आप अचीव नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 2 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 मार्क्स. ओके, बिकॉज आपने फैक्टराइज करना है, वो ईजी है, तो आप बगैर देखे भी कर सकते हैं. एवरीवन गॉट इट? मैंने कैसे फाइंड आउट करा गाइस? Yes, sir. बिकॉज आई हैव बीन गिवन टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो मैंने
टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, फॉलो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस पर बुक, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस पर बुक एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स एडेड अप टू गेट द 12 बुक्स. ओके गाइस, तो यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा तो एलसीएम लेंगे. इट विल बी सर 95 टाइम्स ऑफ y plus 2 plus 147 times of y. These are basically what LCM taken, and it will be y over y plus 2 is equals to 12. So let's quickly try to solve and get the working done. It will be sir 95y plus 95 times of 2 is basically 190 plus 147y is equals to 12y square plus 24y. Okay. So 12y square plus 24y. So it will be 12y square plus 12y square plus 20. पहले simplify कर लेते हैं. Everyone got this? If anyone is not getting, let me know. Sir, ये y to y plus 2 है ना, वहाँ जाके multiply कर दिया students 12 के साथ. तो 12y square plus 12 2 is 24 times of y, तो ये बन गया. Hope everyone got it. मैं repeat कर देता हूँ. 12 को y into y plus 2 को I've taken to the other side. Cross multiplication multiplied with 12. So I've got 12y square plus 24y. Students are appearing for the exam, so I think everyone will understand this technique by now. Direct multiplication. So 95y plus 147y and 95 plus 147 will be 242. Try to show as much working as possible. It will be 190 plus 242y is equals to 12y square plus 24y. So 12y square is equals to, let's bring it to the other side. 24 minus 242 will be 24 minus 242 will be, sir, negative 218y. Negative 190 is equals to 0. And definitely we'll have to simplify this. So let's try to simplify, because they are saying that we have to get 6, right? So it should be that we should take, I think, 2 common. Okay, students, if I take 2 common, 2 6 are 12 and 2 times of 109. 109 times of 2 is 218y, and 190 divided by 2 will be something around, do it in the calculator, 95. It is exactly matching, students. 0 will cancel out with the 2. Is everyone getting that? So here we go, sir. It is proved. Hence proof 6y square minus 109y minus 95 is equals to 0, which is done in the simplest form. People got it clear with me, guys? Any questions, any problems, let me know. ठीक है? Hope everyone got it, guys. Clear? Understood? This is proved, okay? Guys got it? Understood? The next thing is we have to factorize. Make sure you can't do quadratic formula application here, guys. Okay, nobody will do quadratic formula application here. You have to apply this thing, okay, for 2 marks. So here we go, sir. 6y square minus 109. So let's think about the factors. So anyone can give me the factors. Make sure you can check with your calculator the answer, but you have to show it with the factorization, okay? So 6 times of 95 is 570. Or try to get something. How can I get 109 and 570 as well? Can we not simplify it further? 95 divided by 3 or 95, I think we can't simplify, right, further. So no problem. 6 into, let's try to do it. 6 into 95 is 570, and try to get some values that will give us 109 as well. Okay, 570 divided by 10, 57 and 10, no, 570 divided by 16. Just get some values. Let me know, guys, anyone who have already got the answer for this. Make sure you have to do it factorizing method. Okay, understanding, guys, clear with me? Hello, got it? Yes, sir. So, yep, anyone? Tell me the factorizing. Guys, come on, anyone? 90. 38 and 15 are giving 570, but 38 plus 15 will not give us 109. So it should be a huge number. 570 divided by 57, 570 divided by 38. And so next we can say that it will be 45.
Anyone, any numbers, guys? Hello. Waiting for response. Anyone can help out quickly. Come on, guys. It's simple. Just have to find out the factor number, okay? Let me know, guys. Nobody is willing to help, which means So isn't it going to be negative 570? negative 570. Both the number, my plus minus is not the issue here. Are you getting it? Yeah, okay. 570 divided by 114. Yep. So here we go. So it will follow very carefully. So 6 times of 95 is 570, and you can say 114 times of 5 is also 570. Just have to add 570 by 5. So 114 times of 5 is 570. And that will also give us 109 as well when we do minus plus, and minus plus is always minus. So it will be 6y square minus 114y plus 5y minus 95. So it will be, sir, 6 common, 6y common, and 114 divided by 6, I hope it is giving y minus 19, and 5 common and y minus 19. So this is the answer, students. 6y plus 5 times of y minus 19. Okay, understood? 6y plus 5 and times of y minus 19. Okay, got this clear? Following? Yes, sir. Yes, sir. So it will be this one, and then they're asking find the value of y. So everyone knows what will be the value of y. Will it be y is equals to 19, or will it be y is equals to, this we have done in detail, minus 5 over 6? That is basically, yes. So it will be, sir, y is equals to, anyone? It will be 19, guys, okay, because y is a price. So price cannot be negative, right? Common sense, right, guys? Understanding? Yes, sir. Clear? Together, make sure just write it down that this one is not possible. Reject this one, okay? Not possible or rejected. And this one is the correct answer. Our final answer will be this one, y is equals to 19. With this, we have solved question number 5 as well, with which I'm done. But it's the last question that is left. We did the question number 6 onwards. We have done till the question number 11 in the last class, okay, 12. So last question for the day will be on trigonometry. That is question number 7 on trigonometry to complete this paper. Okay, guys, got it? So it will be, so trigonometry. And what we have is basically a normal, not a difficult question on trigonometry, easy level of question. Let's try to work it out and solve it with all what's the relative, what is left, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16. It's a huge question, okay? 16 marks on trigonometry they are testing you on, which means you can understand its importance. The diagram show the right angle triangle PQR on horizontal ground, okay? So right angle triangle PQR on horizontal ground. Something X is vertically above R, and the angle of elevation of X from P is 21 degrees. XR is this thing, and we have to calculate the angle of elevation of X from Q. So it's nothing difficult. What we need to understand, let me make it for you guys here. Separate diagrams, okay? XRQ means this is, sir, X, this is R, and this is Q. Just have to find angle, this angle, student, this is called the angle of elevation of X from the Q. So this is what they are looking at, okay, students? You have already got the measurements. This is, sir, 2.8. This is 2.8 meters, and that is basically 7.1 meter, okay? So it's a right angle triangle here as well. So it will be what? Anyone volunteer? Opposite over adjacent, okay? So it's a tan angle opposite over the adjacent, guys, okay? And I expect the answer to come as theta is equals to tan for the answer. That is basically, anyone? Tan 2.8 divided by 7.1. So it's coming, students, 21.5, one decimal place, always the angles, okay? So 21.5 degrees is the answer of part A. Any questions, anyone? Part A, we have got it, guys, okay? Then part A, part 2, will we calculate the angle of calculate PQ? So it's not difficult as well. In order to calculate PQ, we'll take this direct triangle, okay? Is everyone with me? Do we have PR? We don't have PR, but we have that angle.
and we have basically RQ as well, so we can find PQ. Follow carefully, students, what we need to do. Just find out this, you have this angle, students, okay? Angle of elevation they have given from X from P is 21 degrees. So this is 21 degrees, okay? Everyone getting it? So use this opposite over the adjacent. Again, I will apply, sir, tan 21 degrees is equals to opposite, that is 2.8, divided by the adjacent, that is basically PR. Okay, so we'll have to find first PR, sir. Anyone have any doubts? Let me know. 2.8 divided by tan times of 21. So it will be 2.8 divided by tan 21, which is basically coming 7.3 meter. Okay, once you got the PR measurement, you can easily find out by using Pythagoras theorem. That is what will be the PQ. Okay, so PQ will be in front of the hypotenuse. It is. So, sir, make sure two workings to be done this. So it will be, sir, PQ square is equals to 7.1 square plus 7.3 square. So it will be, sir, PQ is equals to square root of 7.1 square plus 7.3 square, which is coming 103.7, students. So almost more than 10 centimeter will be the answer for this, guys. So square root of 103.7 will be 10.2, one decimal place. I'll round off as always. So three significant figures. PQ is 10.2 centimeter, 10.2 meters. This question is in meters. Anyone any doubts? Let me know, guys. Part A is clear, done. Part A is finished, okay? Trigonometry, Pythagoras Yes. theorem, ratios, using the help of angle of elevations we have done. Next is part B for 3 marks, calculating the acute angle KML. Now right angle triangle is finished. I hope everyone is with me, guys. Following now the right angle triangle is finished. We have to calculate acute angle KML, which means that we have to find, sir, this angle, or let's mark it with a broader color. This angle we have to find, students. So it will be, what we can do, we can apply sine, students. So sine 32 degrees over the opposite value, and sine m degrees is equals to this formula. Just when we don't have a right angle triangle, we know what to apply. That is what we have to do, students. Here, make sure, as always taught you, that do it one time only, that is sine m will be equal, or just do it first. 16 point sine times of sine 32 is equals to, make sure show all the workings as much as possible. Just cross multiply first, okay? Everyone getting it, guys? And then the final step, show the final step. 16.7 times of sine 32 divided by 9.1 is equals to sine m. So m is equals to sine inverse of this angle. Okay, guys, getting it, everyone? Sine inverse of this answer. Okay, so it will be sine inverse of 16.7 sine 32 divided by 9.1. So directly exact answer you will get. That is basically 76.5 degrees. Okay, 76.5 degrees. Okay. 76.5 degrees. We got part B. And then we'll come down to part C as well, which is basically the area of the triangle ABC is 62 point. Everyone got part A and B, guys? Everyone got part A and B? Okay. We're just finishing. Okay, just finishing. Just give me 5-7 minutes. We are finishing. So it will be the area of the triangle ABC is 62.89. Okay, the area is given to us of the triangle. Show that this angle is this. So again, a separate question for part C. Guys, everyone clear on part A and B? No doubts, right? Yes, sir. So it will be simple that we have to apply. It's not a right angle triangle, so it will be area applied for, guys, area of the triangle, that is 62.89 is equals to half into the adjacent sides, and this will be into sine angle A, so angle or sine angle BAC for the examiner perspective. So here we go, sir. It will be 62.89 into 2, that is coming 125.78, and divided by, so this, what I did was, follow carefully, 2 times of 62.89, so I got 125.78, and 12.3 into 21.5, 12.3 into 21.5, that is coming to 64.45. Okay, 264.45, sir, is equals to sine angle of BAC. So the answer will be
angle A is equals to sine inverse of this answer. Is it matching or not? That we can check now. Sine inverse of 125.78 divided by 264.45. So it will be 28.4 degrees, which is correct. Alhamdulillah. Okay, that is proved. It is proved, students, for 2 marks. That is 28.4. Okay. So that is what we have done. And the last is calculate BC. That is basically calculate the length of BC. Okay, we have to do. So we can do it using again how we can find out BC length. Okay, we have one angle that is 28.4. So we'll have to apply. They have already tested on sine. They have already tested on sine rule, sir. Sine rule tested, Pythagoras theorem, ratios tested, area of the triangle tested. What is left? Cosine rule is left. So we'll solve this using cosine rule. Cos 28.4 degrees is equals to 21.5 square plus 12.13 square minus the BC square divided by 2 times of 2 times of 21.5 times of 12.3, sir. So it will be simplification and solving only. That is 2 times of 21.5 into 12.3 is 528.9, sir. So this is coming 528.9 times of cos 28.4. And let me highlight, this thing is coming from here, sir. And these two are coming from the 20, when we add these two, that will be 21.5 square plus 12.3 square. It is coming, sir, 613.54 minus the BC square. So it will be the BC square is equals to 613.54 minus 528.9 cos 28.4, sir. So BC measurement will be coming square root of the answer, whatever it is. That is square root 613.54 minus 528.9 times of cos 28.4. Just do it one time only. I'm getting 12.2 as the measurement for the BC length. Okay, guys, understood? Yes, sir. So this is done as well now. We have done this, and the last part of the trigonometry question talks about AB is extended to a point D such that angle BDC is 90 degree. We have to calculate BD measurement now. We have to calculate BD measurement. They are extended. So it's not a problem. Just look at this whole triangle again. It will be simple understanding. We have the angle and we have the measurement, sir. So what we can do, students, it is adjacent, and that is basically in front of the 90 degree is hypotenuse. So it will be adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse will be cos 8.4. Adjacent is basically AD. First, we'll have to get AD measurement, guys. Okay, we'll try to get first AD. AD divided by the hypotenuse, that is 21.5. Hope everyone got this right. So we'll get the total measurement of AD, that is 21.5 times of cos 28.4 degrees, which is coming, students. Guys, got it clear? Yes. 18.9 centimeter. Okay, AD measurement is coming, sir. 18.9 centimeter. You will get 2 marks up till here. But if you leave this answer here, you will only get 2 marks. The last mark will be, sir, this whole is 18.9. Out of this, AB is 12.3. We have to find BD, sir. So BD will be equals to 18.9 minus 12.3, sir. 18.9 minus 12.3 will give me the answer, that is 6.6 degrees, 6.6 centimeter, which should be correct as well, and it is correct as well. So here we go. This is done, with which we complete our October-November 2023 paper 42 with very good questions and understanding on this. Okay, guys. I will be uploading the paper on the drive, so everyone can take help and visit from there. Okay. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye.